Hello and a very warm welcome to everyone to a brand new episode of Cricket Fan Corner with Atif and Faisal. Um, Faisal, आज के दो important topics हैं. Tim Paine resignation, which is a big news, and then also Azeem Rafiq. All these thing which came up from the Yorkshire cricket board and this thing. So I think it's a big news in cricket fraternity. So let's talk about the Tim Paine. I mean, what happened? Otherwise, we have selected a very, very controversial topics over here today. लेकिन Yeah. बात इस ये है कि टिम पेन का जो resignation आया फ्राइडे के दिन, I was just sitting and I was working, मैंने एकदम से मोबाइल उठा के देखा नोटिफिकेशन टिम पेन रिजाइन और कोई किसी स्कैंडल पे, I was shocked. Same here, yeah. और जब मैं मजीद डिटेल में गया, I was extremely shocked. मैं समझा कि कोई लेडीज को स्कैंडल हुआ होगा. Yes. वो स्कैंडल उस वक्त हुआ है जब उसको उन्होंने कैप्टन अपॉइंट किया. वो अपनी फर्स्ट सीरीज में था, उस दौरान ये स्कैंडल हुआ है. मतलब वो जो सेक्स बेस्ड मैसेजेस जो भेजे गए हैं, जो पिक्चर्स भेजी गई हैं, वो अलग चीज़. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल. लेकिन वो बात इतनी सी यार कि आई वाज बिट शॉक्ड, and that for me raises a question on Australian cricket board integrity and a lot of things over here. Last two captains, Steve Smith went out after this sandpaper gate. Now Tim Paine is going out because of this scandal that has came out. Yeah. What's happening in there? और जो सबसे मेरे लिए जो शॉकिंग बात है, the Australian cricket board knew about it. They slept over it for like 4 years. And Tim Paine खुद ही he came out himself, like when he realized that this news is going to be broken into the Australian media at any time. So I believe I was a bit shocked कि यार ये क्या किया. अब जो अभी जो लेटेस्ट उनका जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है, उसने यही बोला है कि that was a mistake from the Australian cricket board. So just imagine, Tim Paine was selected as a captain. जब वो टीम में आया था तो वो भी अजीब सी बात थी कि यार 7 साल बाद उसको सिलेक्ट किया गया. जब उसको कैप्टन बनाया गया, a lot of people are even shocked because at that point of time they had the option of going with Khwaja or Hazelwood and all these sorts of stuff, but they selected him because of a clean boy image that he has, that he's a very clean person. Yes. फिर एक पूरा एक कल्चर सिस्टम बेचा गया था सबको कि यार now the Australian cricket team is going to work on changing the culture. और उसका पोस्टर बनाया गया था टिम पेन को और जस्टिन लैंगर को. भाई वो किसी को स्लेजिंग नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू बिहेव वेल, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वाज थोड़ा सा जो है ना, उनके एटीट्यूड के इश्यूज चल रहे थे बहुत ज्यादा ऑन फील्ड. हमेशा सही थे. इमेज के साथ उसको लाया गया. और फिर ऐसा लगता है कि वो जो 4 साल जो है ना, फॉर लास्ट 4 years people was sold a lie and now it has came out on picture. देखिए बात इतनी सी है कि फॉर मी this is a big scandal, लेकिन then it is pardonable as well. इससे बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, लेकिन yeah in a way it's shocking. It's very shocking. It's shocking. And I mean, timing check karo yaar. I mean, you have Ashes is coming up maybe within a month now, और ये चीज हुई थी 2018 में. So do you think कहीं ना कहीं the responsibility will fall on the Australian Cricket Board shoulder कि जो भी उस टाइम पे पहले था, I don't know maybe who was involved there at that time. Maybe Mark Taylor was also there in that in that committee. So you think इन्होंने intentionally मार्क टेलर आया है, इसको हाइड किया है या क्या किया है? I mean, आपने क्विक इन्फो पे मार्क टेलर का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा. हाँ, yeah. Again, I was shocked यार. मतलब मार्क टेलर जिस तरह की रीजंस दे रहे हैं, I'm not going to buy it. Or what he said that from the family point of view, from personal point of view, from image point of view, हमने ऐसा किया. I'm not going to buy this reason. It was very, especially I believe, I always thought, and I still believe, that Mark Taylor is one of the most sensible voices in Australian cricket. He is, yeah. True. Great captain. लेकिन I'm very shocked कि यार ये decision में वो भी involved थे, because he is considered to be a very sensible person. It is very shocking. और अब जो question ये उठ के आता है कि will Tim Paine be, there are two questions to answer. Will Tim Paine be the part of Ashes team? Chances इसके बड़े 50-50 वाले हो गए, क्योंकि बैकअप में बड़े कीपर्स मौजूद हैं. और बहुत एक बात पिछले 1 साल से चल रही है, जब से ये लोग इंडिया सीरीज आया था, कि इस टिम पेन द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन ऑस्ट्रेलिया. Considering the amount of talent like Alex Carey, Inglis and all these sorts of players, Jimmy Pearson जो कि क्वींसलैंड का, he's performing exceptionally well. इनके मौजूदगी में he's the best choice.
Yeah. People are saying he is only holding on to it because he's a captain. एक तो ये कैप्टन है, दूसरा जो सबसे जो जो बड़ा क्वेश्चन है, who is going to lead Australia? Lead Australia. True. Yeah. तो Australian cricket is in crisis right now, in simple words. Yeah, that's true. क्योंकि अभी आपके पास फिंच इज नॉट देयर, राइट? फिंच तो टेस्ट क्रिकेट के लिए है ही नहीं, सो वो आपका वनडे का कैप्टन या आपके T20 का कैप्टन है, तो अब आप यहाँ पे, और मुझे ये लगता है जो कुछ भी हुआ, whatever happened with Tim Paine, he had to step up, सबके सामने, नेशन के, apologize करना पड़ा, जो भी है, बट अब आप एज अ कैप्टन हैं, आई मीन यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री, और ये जो कुछ भी हुआ, आई एम श्योर कि टिम पेन के अलावा बोर्ड को भी पता था, एंड बोर्ड दे जस्ट ट्राई टू हाइड आउट कि चलो भाई हम उसको बाद में ले आएंगे, इट्स अ पर्सनल थिंग, लेकिन पर्सनल था, लेकिन आई मीन आपकी पूरी फैमिली या सारे लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, सबको वो पता ही था, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी से तो वो स्टेप डाउन हो ही गया है, they would even consider him for this Ashes के लिए जो 14 या 16 जो है वो अनाउंस करेंगे। मुझे तो मैं 50-50 लगता है, मुझे तो 25-75 लगता है। I don't think so कि they will consider him for this squad. टीम तो देखो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, और यही तो शॉकिंग बात है कि अब एक टीम अनाउंस हुई भी है, कैप्टन ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है, अब कैप्टन विल बी रिमूव्ड। आई बिलीव, मतलब आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, हु शुड बी नेक्स्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? क्या लगता है आपको? I mean, see, you have a Steve Smith, you have a Warner, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि उन दोनों में से फिलहाल, I don't know, I mean, you think कि कहीं ना कहीं से एक different नाम सामने आएगा, maybe Lyon, Hazelwood, I don't know. देखिए, I believe इस कंट्रोवर्सी के बाद Australian cricket board will never go back to another controversial captain. Yeah. मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, Cummins will be the captain and maybe Steve Smith or Usman Khwaja will be the vice captain, because दोनों का leadership का experience है. Yeah. I believe they will have, because again now Cummins के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इनके पास. Yeah. I mean, Khwaja has been doing the captaincy for Queensland for many years now, so वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, कि उसने अभी स्कोर किए हैं, तो why not Usman Khwaja? But again, अभी मैं और तुम ये बात कर रहे हैं, and again, as you said, Cummins, yes, he's young, and he's been their number one bowler for the last few years, even though the series which they lost against India, उसमें भी Cummins की bowling सबसे best थी. So yeah, I mean, maybe Pat Cummins or Usman Khwaja. So Australian cricket culture में बैट्समैन है जो कैप्टन बने. The last captain, I mean, it was Ray Lindwall back in 50s, जिसने सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए कैप्टनशिप की थी, was a fast bowler. Yeah. और दूसरा ये Cummins, he is a NG prone fast bowler. तो बहुत चीजें, मतलब जो है ना, it's a very tough, tricky decision. मुझे तो ऐसा लगता है, अगर though I'm not in the powers over there, if you ask me, I believe Cummins and Khwaja can be a good combination. One na, agar if they don't want Khwaja because he still is fighting for the position in the team. I believe I can bring, if you ask me, Alex Carey should be brought into the team as a vice captain, keeper vice captain, because बहुत ही sensible बंदा है. He's a very sensible player. He's a very smart player, and he has done very well in the domestic circuit. So I believe he's a leadership material. All right. Okay. So let's move on to Azeem Rafiq. What is going on with the Yorkshire County Club? I mean, for the last 1 or 2 weeks, I saw Azeem Rafiq's statement. I heard it, and then I heard their other, the Yorkshire cricket, their chairman also, he came up, and then there are a lot of allegations, going on. I mean, Azeem Rafiq definitely. I mean, he was a smart cricketer, when he was in his peak, but I think, he went through with so many things, man. I really, feel bad for him. So from one Ashes contender to other Ashes contender, from Australia to England, so what to say, दोनों में अब देखें कितनी मजे की Ashes होने वाली. ये जो इशू है अजीम रफीक का, I believe इसमें तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हो चुका है, अब तो वहां की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है, इसके लिए बहुत मैसेज बन गया है. This is a yes. And you know what?
ये जो है ना, देखिए कैप्टन जो इंग्लैंड का जो वुड, ही इज आल्सो यॉर्कशायर प्लेयर, Yeah. सही ना? तो एक अजीब सा उन पे भी प्रेशर होगा, उनको भी अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है। और ये एक अजीब सा का वाक्य, बिकॉज मैं जितना इसको उधर पढ़ता हूँ, ये तो एक कॉन्सेप्ट लगता है, वो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म हो गई थी वहां पे। तो जिस तरह की बातें निकल के आई, आई वाज शॉक्ड कि जबरदस्ती, लाइक यू नो, एट द एज ऑफ 15 उसको रेड वाइन किसी ने पकड़ के पिला दी, इस किस्म की बातें हुई हैं, या जिस किस्म के वर्ड्स यूज किए गए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दोस रेसिस्ट वर्ड्स, लेकिन इट वाज क्वाइट शॉकिंग। बट यू नो, देयर कैन बी वन मोर एलिमेंट एज वेल। होता क्या है ना कि समटाइम्स देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस बायस। ये हम लोग समझते नहीं है, ये बड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको हम लोग आगे मैंने पढ़ा था कुछ, व्हेन आई वाज रीडिंग माय ऑल डूइंग माय मास्टर्स एंड एवरीथिंग। ये कांसेप्ट है द कांसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस बायस, जिसमें क्या होता है, यू हैव अ बायस अगेंस्ट अ पर्सन बट यू Yeah. डोंट नो योरसेल्फ। Yeah. आई बिलीव इसमें बहुत सारा, ये रेसिज्म भी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियस बायस वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल जो गैरी बैलेंस की बातें की गई हैं, Yeah. Gary Barris was very close with Azeem Rafiq. They are very good friends. क्या पता I, उसने उसने ऐसी मजाक में बोला हो, उसके लिए वो मजाक हो, लेकिन he never felt कि यार ये racist remarks है जो चल रहे हैं। you know what? I mean, I feel like racism has no place anywhere in this world. But और कभी कभार तो मुझे लगता है कि yeah, we are in 2021 and yet still, you see a lot of racist comments, racist, people are out there who still feel ke, with the color, with the ethnicity, races and gender, उस basis पे आप जो racism कर रहे होते हैं, I don't know. I mean, or cricket is a gentleman game. I mean, you talk about all the nations who are playing cricket, and the history happened with South Africa, when they got a ban for many years, like 12, 13 years, 16 years, they could not play the cricket, because of all this racism. So now again, now we found many players are still under this racism attack, which is completely unacceptable. And मेरे जो जो ज्यादा शॉकिंग बात ये, the amount of players that have played from Asian descent, like for example मोइन अली, आदिल राशिद, इससे पहले जो है आप ओएस शाह होता था, Yes. विक्रम सोलंकी, all these guys, they have played and they're all from Asian descent. Mm. Kabir Ali, he was the cousin of Moin Ali, I believe. तो ये इन सब में खेला है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की तरफ से, and they have played. And for some reason, I'd always thought that England has dealt with the issue very well. But it was very shocking to see that इनके grassroots level पे इस किस्म की चीजें होगी. But I believe the game has now got a very good opportunity to fix itself up. But again, This is the opportunity. yes. But ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मैं blame जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को दूंगा कि सारे, अगर आप लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग। क्योंकि अगर आप दूसरे प्लेयर्स भी देखो, राइट, इवन इफ यू look at the current English team, you have Adil Rashid is there, Moeen Ali is there. They have been playing this game of cricket for many, many, many years. So ये चीजें कहीं ना कहीं होंगी, but you cannot blame के सारे different काउंटी जो है वो सभी ऐसी होती है। यॉर्कशायर में भी कुछ प्लेयर्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि यॉर्कशायर की पूरी बोर्ड एंड ऑल जितने भी प्लेयर्स हैं उनके स्टाफ सारे जो हैं वो इसी तरह के होंगे, नहीं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि आपको हमेशा जो दे फील कि वी आर सुपीरियर, कलर या जो भी है, वो चीजें गलत हैं। यही तो आपको सीखना है कि यार देयर इज यहाँ पे रेसिज्म की कोई वैल्यू नहीं है। आई मीन, लेकिन स्टिल लोग अभी भी रेसिस्ट कमेंट्स पास करेंगे किसी लोग के, कोई अगर किसी का कद का है, किसी का कलर से है, किसी की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आई मीन, दिस इज the crazy world, man. We are living in a crazy time. What to say, but that's what I'm saying. Now this is the opportunity for cricket to fix itself up. क्योंकि ये issues एकदम सामने उठ के आए और एकदम से देखिए यार ऐसे से लोगों के नाम आए. I just don't want to name people over here. Like I was shocked, because for example, one of former England captain, I believe he is one of my favorite captains, because when he became the captain, England was here, and he lifted them to a place where they were able to win the Ashes in 2005. They defeated a very strong Australian team.
Yeah. I was shocked to hear कि यार ये बंदा भी. So in many ways, बात इतनी सी है कि now this is the time for people to fix this thing up. Yes. We do all the BLM thing and everything, लेकिन इसको practical sense में लाना बहुत जरूरी है, because racism, if it exists, it is as bad as fixing a match, True. or sport fixing. Trust me. True. And at the same time, Michael Vaughan also denied all the allegation, which were put against him. So, and again, I mean, racism is not banter, right? That's what People talk shocking for about me. it's just a banter. So it is not a banter, And that- Racism is racism. So, And that's what shocking for me. Michael Vaughan, I believe Michael Vaughan is one of in fact, the best English captain in the last 20 years for me. last 20 years. When True. he became the captain, the England team was here. It took them Yes. to a different level altogether. He is a great leader. लेकिन जब उसका नाम आया, I was shocked. Even Michael Vaughan, it was a shocking thing for me because I have a tremendous respect for him as a leader. He's awesome. Yeah, but I mean, with the spirit of cricket, for the sake of this, for this whole gentleman cricket game, we all stand up to racism. There is no place for the racism in cricket. So I hope that jitne bhi cricket boards hain, as you just said, English cricket board या Australian cricket board या ICC है, इसको seriously इसको देखे और किस तरीके से इसको solve कर सकती है ताकि इस तरह के incident, I mean, these incidents should never happen, in cricket. चाहे वो आपके डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो. इंटरनेशनल लेवल पे तो ऑफ कोर्स मैंने होते भी होंगे, तो नॉट रिसेंटली, क्योंकि अभी स्क्रूटनिंग इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है आईसीसी की. लेकिन आई होप कि आईसीसी इसका स्ट्रिक्ट एक्शन ले और प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो. इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो रही है, लेकिन एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो और ये चीजें खत्म होनी चाहिए गेम से. And I believe, we must, say some words for Azeem Rafiq. What he has done, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए. बहुत, बिल्कुल बिल्कुल. So we must congratulate, everyone must congratulate him. और उसको शाबाश देना चाहिए कि at least he came out. बहुत हिम्मत चाहिए, मतलब what he's trying to, Yes. he's trying to take on a whole system on himself, which is a big thing. सही बात है. I mean, जिस तरीके से उसने बताया, he was forced to drink red wine by a teammate and all these things happened. So that is bad, man. I mean, he had never drunk alcohol before, and then all of a sudden you are just pushing him to, कि ये लो भाई पियो, जबरदस्ती पियो, which I mean eventually he had to. So और फिर वो बेचारा किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है, क्या क्या चीजें हुई हैं. तो I definitely, Azeem Rafiq, I believe personal life में he suffered a very bad loss. Death of a child is like, is like a very painful thing, basically. नहीं, I'm definitely, man, I am with Azeem Rafiq. और अगर if ever Azeem Rafiq watch this channel, तो उसके लिए बिल्कुल we support him, and I hope कि he comes out clear, and then जिस तरीके की ये सारी चीजें चल रही हैं, इसके स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए आईसीसी की तरफ से. अगर काउंटी लेवल पे कोई इस तरह की चीजें हुई हैं तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और आईसीसी को एक बिल्कुल सीरियस एक्शन लेना चाहिए इसका. ऑलराइट, तो इसी के साथ ही आई थिंक दैट concludes our today's session. Thank you very much for watching again. Please do subscribe our channel and let us know by putting your comments in the video. We will bring more cricket related news, and then there are a lot of cricket stuff going on. So we will be back soon. Take care and have a good one. One more thing, which I like to add. Sure. This channel is by the fans for the fans. Always. That's the mantra. We are common people talking about cricket the way we understand. So please like and subscribe, guys. We have been working very hard. Thank you so much. Thank you. Take care. Goodbye. Yes.